अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इट्स माई स्टाइल बाय आयशा। वीवर्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आज जो वीडियो बना रही हूँ वो बड़ी स्पेशल है क्योंकि वी आर बेसिकली ऑन समर ब्रेक और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फ़ारिग हैं और बच्चों के लिए आज हम बना रहे हैं चॉकलेट चिप कुकीज़ और बच्चे ख़ुद बना रहे हैं। ठीक है, सो अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा एंड कासिम आर गोइंग टू मेक chocolate chip cookies or they are going to guide you. So let's see. So Abdullah, आप हमें बताएंगे what ingredients you need? Today to make the chocolate chip cookies we will need half cup normal grinded sugar, half cup brown sugar, 1 1/4 cup all purpose flour with 8 tablespoon butter, an egg, some chocolate chips with half teaspoon baking powder, half teaspoon salt and 1 tablespoon cornstarch. जी, 1 tablespoon cornstarch. So Abdullah is going to mix them all and Mustafa and Qasim are going to help him. So challenge Abdullah, please. So first, viewers, first we are going to add butter. So Abdullah, please add butter in it. Yes, very good. Okay, Qasim is helping him. And then we are going to add half cup of white sugar. It is grinded. And half cup brown sugar. Ji, please. Now please mix it up. Abdullah, first mix it. Abdullah जो है वो more convenient to do work with left hand, huh? So Abdullah is doing works and जी ओके जी, अब्दुल्ला ने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। जी मुस्तफ़ा, यू वांट टू डू सम मिक्सिंग एज वेल। सो इस तरह ये बच्चे जो है वो बेकिंग भी सीख लेंगे, इनका टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। सो आई विल सजेस्ट मम्मीज़ कि आप घर में इस तरह की खुद से कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट कर लीजिए ताकि बच्चे गर्मी में घर के अंदर भी रहें, इंजॉय भी करें और कुछ सीख भी लें ऑब्वियसली। जी कासिम इज़ मिक्सिंग वेरी वेल। ओके जी कासिम, थैंक यू सो मच कासिम। नाउ अब्दुल्ला प्लीज़ ऐड एग। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ड्राई इंग्रेडिएंट्स और उसके लिए अब्दुल्ला हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस, ये सीव आप ले लीजिए। सो अब आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। ओके जी, मुस्तफ़ा भी इनकी हेल्प करेंगे। अब्दुल्ला प्लीज़, हाँ इसको ज़रा इसके ऊपर आप डालते जाएं इंग्रेडिएंट्स और ये चम्मच आप हटा लीजिए अब्दुल्ला। सो प्लीज़ लेट मी कीप इट नाउ। अब्दुल्ला वन बाय वन प्लीज़ कीप ऑन एडिंग द इंग्रेडिएंट्स। पहले आप डाल रहे हैं, ये ऑल पर्पस फ्लावर है जी। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा शेफ़ और बेकर्स मौजूद हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। जी Mustafa, wait a minute, let Abdullah add all the ingredients and then you are going to please now Abdullah please, what is this? You have added 1 1/4 cup all purpose flour And now I am adding Abdullah 1 tablespoon cornstarch, 1 tablespoon cornstarch and then add half teaspoon sugar salt जी and very good Qasim, half teaspoon baking पाउडर powder. जी, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप इनको ज़रा, मुस्तफ़ा आप प्लीज़ ज़रा सीव कीजिए। थैंक यू मुस्तफ़ा, इधर देखेंगे आप जी। आप प्लीज़ आराम से, बाहर नहीं गिरे जी। अब्दुल्ला आप मिक्स कर रहे हैं, आप आराम से अब्दुल्ला, स्लोली, बाहर नहीं गिरना चाहिए। सो कीप ऑन टेलिंग किड्स के कैसे करना है ताकि ये परफॉर्म भी करते रहें और लर्न भी करते रहें, विच इज़ वेरी गुड।
जी अब्दुल्ला, मैं आपकी हेल्प कर दूँ? हाँ जी प्लीज़। जी अब्दुल्ला, कहाँ तक आप पहुँचे जी? अब जब ये मिक्स हो गया, हम इसके अंदर हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे अच्छी स्मेल देने के लिए। जब ये डल जाएगा हमने इसको ओके जी अब्दुल्ला, अब आप क्या करेंगे? मिक्स हो क्या ये? हाँ जी, तो अब हम इसके अंदर ये चॉकलेट चिप डालेंगे। आप जितने भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इतने काफ़ी है सो मम्मा? वाइट चॉकलेट, जी जी और डाल दीजिए। जी कासिम, यू वांट सम? Okay, Qasim, okay. Qasim do not want to add in it. Qasim just want to eat it. Okay. So, G, please mix it. Now we will mix it so that properly, so that all of the chocolate chips are mixed perfectly in the dough. So when we bake the cookies, we have a good amount of chocolate chip in a single cookie. G, once you mix it, so Abdullah, what you are going to do, you just grease your hand. Grease our hands. And make small balls and keep them in refrigerator for half an hour ताकि वो थोड़ा सा अपनी शेप में आ जाएं, and then we are going to bake. It's not a long process, बहुत जल्दी बन जाते हैं जी अब्दुल्ला. So you can take a spoon and ताकि एक ही साइज के सारे बने. अब्दुल्ला, can you show कि जी किस तरह से आप बना रहे हैं? Yes, so अब्दुल्ला जी, आप you can take 1 tablespoon and you can use that spoon to make cookies. जी. I also want to make it. Okay, Qasim also want to make it. So Abdullah, just I'm giving you this spoon. Just use it, and so every cookie would be of same size. Okay. So use take batter from I this. make from this. Okay. Take batter. Add it back into the dough. So this is also not different. Okay. This much. Yes, very good. Okay, Qasim, nice. Okay, so Abdullah, yes, you are right. So just make balls and put them on like the tray. This. And yes, very good. We will put them on a tray. जी, और हम इन्हें रखेंगे हाफ एन आवर, रेफ्रिजरेट करेंगे. सो कासिम इज़ हेल्पिंग. थैंक यू कासिम, थैंक यू सो मच. सो इस तरह घर में आप छोटी छोटी सी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो इनको इन्जॉय भी करें और अपनी बनाई हुई कुकीज़ ऑब्वियसली वो खाएंगे भी शौक से. So it's very healthy. So we are making all these ball and then we are going to refrigerate. तो bake करके हम आपको दिखाते हैं. Okay? We have put the cookies in the freezer for around 30 to 45 minutes. Now they are a bit cool, so now we will put them in the oven for 15 to 18 minutes, and then we will show you the final result. And if you would be thinking that why are the cookies round, when the cookies are being baked, they take their own shape, and you can also bake the cookies without putting them in the fridge or freezer, but it de-shapes the cookies when you are baking them. अच्छा, एक और बात आई जस्ट वांट टू ऐड अब्दुल्ला कि यू नीड टू पुट देम एट डिफरेंट डिस्टेंस पे ना, थोड़ा सा यू नीड टू पुट देम. सो आई एम जस्ट मूविंग देम अप. इनके बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि जब ये बिकॉज ये फ्रोज़न है ज़रा डी शेप, जब ये अपनी शेप लेंगी तो एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए. सो हमें कम से कम इसमें से एक एक कुकी मैं बीच में से हटा लूँगी ताकि ये अपनी शेप मेंटेन कर सके. ओके, सो हम बेक करके आपको दिखाते हैं. All are mine. जी, ये हमारे कुकीज़ बनके तैयार हो गए हैं. सो अब हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे. एकदम से इन्हें मत ओवन ट्रे में से निकालिएगा वरना ये टूट जाएंगे. कीप देम फॉर 15 to 20 मिनट्स, थोड़े से कूल डाउन हो जाएं, देन टेक इट आउट. और यकीन मानिए ये बहुत ही डिलीशियस है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. इफ़ यू लाइक द रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to like. बहुत ही डिलीशियस है.
ज़रूर ट्राई कीजिएगा. If you like the recipe, please subscribe the channel. And don't forget to like.